Okay, so today's new topic is about electrochemistry. Um, it is not that much electrochemistry. Very few things from electrochemistry are included over here. For example, we will just be discussing about oxidation, reduction, and that redox reactions type things. So let's start with it. What is the oxidation number? We say that it is the number of electrons gained or lost by an atom or group of atoms, or we can say that it is the sum of oxidation. We say that it is the sum of oxidation numbers, um, the oxidation states of a compound or of an ion, something like that, right? So let's start over here. An oxidation number is a number that is assigned to each atom or in a compound. It could be positive, negative, or zero. For example, for metals, it is usually positive. It can be positive as well. Noble gases usually have zero oxidation number. Just a second, I think I have to share my screen again. Wait a second over here. Okay, sorry. So this there was some network issue. I'm trying again, showing my screen again to you guys. I hope that you guys can see my screen now. So I was saying that oxidation number of some elements can be zero, like that of noble gases. What is the significance of oxidation number? We say that it indicates whether electrons are being lost or gained. For example, positive oxidation state tells us that electrons are being lost. Negative shows that electrons are being gained. Um, Oxidation number of an atom or ion in a compound tells the degree of oxidation. Higher positive oxidation number means that an atom or ion is more oxidized. For example, अगर किसी की oxidation state +2 है, इसका मतलब है उसने 2 electrons lose किए हैं. And if someone has an oxidation state of +3, इसका मतलब है उसने 3 electrons uh, lose किए हैं या donate किए हैं. So higher the negative oxidation number means that atoms or ions are more reduced. For example, if some species has an oxidation state of a -5, इसका मतलब उसने 5 electrons gain किए हैं. And someone if it will have -1, इसका मतलब है कि उसने 1 electron gain किया है. There are some certain rules which we use to assign the oxidation number. For example, here it is the rule number one. For all the elements, oxidation state is zero. For example, zinc, sodium, magnesium all have zero oxidation state. Non-metals, carbon, sulfur, phosphorus, zero oxidation state. All halogens, although there are two atoms joined together because these two atoms are same and they are mutually joining each other, sharing their electrons. So they have just zero oxidation state. Diatomic elements mean elements in their standard state. They have zero oxidation state. So just keep it remember that every element in its standard state has zero oxidation state. So you say that every element has zero oxidation number in its standard state and form as well.
स्टैंडर्ड स्टेट हो या स्टैंडर्ड फॉर्म हो, सेम ऑक्सीडेशन नंबर विल रिमेन एज जीरो. Oh, I'm sorry. I hope that you guys can hear me now. Yeah. Okay, okay. Thank you so much. So, thing is, that you might have seen कि हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होता है. एंड वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है. फॉर एग्जांपल, मोस्टली हाइड्रोजन विल हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन एक स्टेट ऐसी होती है जहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है. एंड इट इज़ व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू मेटल्स. तो जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ बॉन्ड करता है, यानी मेटल हाइड्राइड, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, for example sodium hydride and magnesium hydride, any metal hydride will have -1 oxidation state. Oxygen is usually, it has an oxidation state of -2, लेकिन जब वो -1 हो जाता है. ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 हो जाता है. कब होता है? व्हेन इट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, राइट? तो इन, लाइक इन H2O2. लेकिन एक और केस होता है, जैसे F2O. इस केस में बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अभी आगे जाके बात भी आएगी. बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो फ्लोरीन विल हैव अ माइनस चार्ज ऑन इट एंड ऑक्सीजन विल हैव अ +2 चार्ज. So because of fluorine, there is -1 times 2, -2 total charge, and oxygen is +2 charge. So that's why. So, and overall, we say that it has a charge of 0. Rules number two, for simple ions, we say that oxidation number is always the number of electrons being lost or gained by that particular atom. अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो टू होएगा, एंड ऑल दैट स्टफ. फॉर एग्जांपल हियर, just to wind up what we have studied, okay, oxidation number of an element is 0. Oxidation number of an ion is the charge on it, that is +3, or you can also write in 3 plus, or we can, again, screen sharing is a problem. Yeah, I know that. I'm just sharing it. Okay. So I hope you can see my screen now. So oxidation number can be, in case of sulfur, it can be -2. Here it is -2. In case of copper, because there is no charge, it means that it has not lost any electron, so it is 0. +2 के form में it has +2 oxidation number, plus के form में it has +1 oxidation number. So it's quite easier. Rule number three is that for compound ions or polyatomic ions, or we can say that those ions which are composed of more than one atom, they have the oxidation number as sum of the individual oxidation states. फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बन की बात करें तो, सॉरी, कार्बोनेट की बात करें, तो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, एंड बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +4. एंड बिकॉज देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट सेकेंड. Okay, you guys do one thing, that all of you please join me on Google Meet. I'm sharing a link over here for Google Meet. तो आप लोग गूगल मीट पे मुझे ज्वाइन कर लें.
Did you guys get the link for Google Meet now? So please join me over there. Please do it quickly. See how you can join me on Google Meet as well. Please join it over there. Sarah, over here. Have I not left the class? I think I have. Okay, so the thing is, let's start our class now from Google Meet. So just a second. अच्छा तो ऐसा है कि we were over here. तो मैं ये कह रहा था कि जो पोलियोटॉमिक आयंस होते हैं या फिर जिनको हम कंपाउंड आयंस कह सकते हैं, देयर ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू सम ऑफ द charges on individual atoms. For example, in case of carbonate, carbon has plus 4 and there are three oxygens, so 3 times minus 2. तो ये क्या बनता है? 4 and minus 6, which is minus 2. So that's why it has a charge of minus 2 on it. It is like this one. I hope you understand that. So similarly, if we can also calculate oxidation number of any element in an ion. For example, if you look at here, nitrate ion, NO3 negative. Each oxidation state has an each oxidation number state has an wait a second, wait, I'm just confused. So each oxygen has a charge of minus two on it because each oxygen has a charge of minus two on it. So total negative charge on this is minus six, right? And each nitrogen will have a charge of x and overall charge is equal to minus 1. So we have a charge which is x is equal to minus 1 plus 6 and x will be equal to plus 5. So we say that in nitrate ion, nitrogen has a charge of plus 5. You understand that? Similarly, if we calculate the charge on Mn, let's say if I have to calculate the charge on Mn, how will I do that? Students who are here in Mercedes LMS, you can join me on Google Meet using the link that I'm sharing over here. All of you can come over there as well. Yes, so much. Okay, so let's continue. For MnO4 negative, you see that oxidation number for Mn is X.
लेट्स से इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो x है. So x plus we have 4 oxygen and each oxygen has a charge of -2 and overall charge is -1. तो यहाँ से हमें पता चला कि ओवरऑल चार्ज -1 है. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x minus 8 is equal to -1 and then we can write down -1 plus 8 and yes we can write down x is equal to +7. So here we can say that manganese has a charge of +7 in MnO4 negative. The sum of oxidation number of compound is a 0. So similarly, we can use the this rule that sum of charges on a compound is a 0. We can find out charge on unknown elements. For example, let's say iron, and we don't know the charge on iron. We say it is x. Let's say. So write down here x times 1 because there is only one iron plus 3 times -1. We are sure that chlorine has a -1 charge because it is in group 7. It accepts one electron. So this overall charge is 0. So x minus 3 is equal to 0 and x is equal to +3. And in case of MnO2, let's say Mn has a charge of, you can say y. So we can write down y times 1 plus 2 times -2 and overall charge is 0. So y minus 4 it is equal to 0 and y is equal to +4 over here. It is like this. अब फिर से किसी ने ज्वाइन कर रहे हैं, लेट मी टेक देम इन. सो हियर वी आर. रूल नंबर 5. इनवेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं किसी चीज़ों के. फॉर एग्जांपल जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 हैं इनका तो ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता ना. इस तरह से देयर आर सम अदर एलिमेंट्स एज वेल जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता. For example, fluorine will always remain -1, hydrogen will always remain +1. Just in case of metal hydrides, it is -1, and oxygen always stays -2. बस H2O2 में इसका चार्ज -1 हो जाता है और F2O में इसका चार्ज +2 हो जाता है. Otherwise, in all of its compound, it has a charge of -2. Oxygen has a charge of -2. Rule number 6 is here variable oxidation number of some non-metals, uh, carbon, nitrogen, sulfur. They are variable and it depends upon कि ये कौन से compounds के अंदर हैं. ठीक है, जैसे हम बात करें CO2 इन सब की अगर हम बात करें तो CO2 में ऑक्सीजन इज -2. तो 2 टाइम्स -2 -4 है चार्ज ऑक्सीजन का, तो कार्बन का डेफिनेटली +4 होएगा. और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन इज -2 तो कार्बन क्या होगा, डेफिनेटली +2 होएगा. एंड यहाँ पर भी इसका चार्ज +4 ही होगा. NO2 में देखें तो ऑक्सीजन हैज अ चार्ज ऑफ -4 इन टोटल, नॉट वन ऑक्सीजन. टू ऑक्सीजन हैव अ चार्ज ऑफ -4. So one nitrogen will have a charge of +4. Over here it has a charge of -2. Over here it has a charge of +2. अगर हम HNO3 में देखें तो ऑक्सीजन it has a charge of 3 times -2 which is -6. हाइड्रोजन has a charge of +1. तो नाइट्रोजन का चार्ज कितना होगा, it is +5. So overall oxidation number is 0 over here as well. और अगर हम SO2 में देखें तो -4 इसका है तो +4 सल्फर का होएगा. इसका -6 है तो सल्फर का +6 होएगा. And it is also +6 over here. And if you look at here तो -8 and this is +2 तो सल्फर का कितना होएगा, +6 चार्ज हो जाएगा. And if we look at PCl3, if it is PCl3, if it is like -1 times 3 which is -3, then phosphorus has a charge of +3. Then if we have it PCl5, तो ये हो जाएगा -1 times 5 which is equal to -5. तो टोटल चार्ज अगर इसके ऊपर -5 है तो यहाँ पर फॉस्फोरस पर चार्ज +5 होगा. ठीक है ना. अब देखें क्लोरीन का यहाँ पर भी -1 था, यहाँ पर भी.
एक क्लोरीन का चार्ज -1 ही है, ठीक है ना। लेकिन फॉस्फोरस का यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +3 है, एंड इट वर्क्स लाइक दैट। In the question, he says that what is the oxidation number of nitrogen in different compounds? तो NO2 में जैसे हमने अभी कहा कि बिकॉज ऑक्सीजन का -2 होता है हर जगह पर, तो 2 टाइम -6 यहाँ पर है, +1 यहाँ पर है, तो ओवरऑल इसको बैलेंस करने के लिए देयर मस्ट बी +5, एंड इफ दिस इज -2 देन दिस इज +2। यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा। Important points is that oxidation number of chlorine in CaCl2 is -1, not because there are two chloride ions. This mean that there are two chlorine atoms in a compound. Um, Always work out the oxidation of one atom of the element, right? In either a compound or an ion, the more electronegative element will always get negative oxidation number. Just in case of, like you can see, O2F, हमने क्या बात की थी कि ऑक्सीजन हैज ऑलवेज +-2 चार्ज, but in this case O2, sorry, it is F2O. In this case, because fluorine is more negative, so therefore -1 times 2, -2 fluorine का चार्ज है, तो ऑक्सीजन का चार्ज is +2। Then it says what is the oxidation number of nitrogen in hydrazine, which is N2H4. So it's quite easy to find it out कि हमारे पास nitrogen is more electronegative. So nitrogen will have a negative charge. Hydrogen will have a plus charge as well. In ICl3, Cl is more electronegative. So that is why Cl will get a negative charge and iodine will get positive charge. And I will share this with you. You can also find out and practice over here. For example, in case of Cr2O7, हम देखें Cr2O7, what is the oxidation number of chromium that is underlined over there? Overall charge is -2 on it. So because we have two chromium ions, let's say 2x charge on it, plus there are 7 oxygen -2, and overall charge is -2 over here. So we can write down 2x -14 is equal to -2. So 2x is equal to -2 plus 14. So 2x is equal to +12, and x has a charge of +6. So chromium has a charge of +6 on it. Here it says that which oxidation state is shown by chlorine in each of these three ions. तो अगर हम देखें हमारे पास है क्लोरेट आयन ClO नेगेटिव, तो ऑक्सीजन हैज अ चार्ज ऑफ -2, क्लोरीन हैज अ चार्ज ऑफ ऑब्वियसली +1, तभी तो +1 एंड -2 ओवरऑल -1 बन रहा है। So we say either we will choose this option or we will choose this option. Actually, in this question, we are going to find out the charge on, or you can say that oxidation state of chlorine. And in Cl negative, you know that it will be -1. ये तो पता ही है। और लेकिन अगर हम इसमें देखें ClO3 नेगेटिव में, तो क्लोरीन हैज ऑक्सीजन हैज अ चार्ज ऑफ -2 टाइम्स 3, दैट इज -6। तो इसके ऊपर जो चार्ज होएगा वो +5 होगा, तो +5 -6 इज -1। सो इट्स, ये यहाँ से प्रूव हो गया कि क्लोरीन हैज अ चार्ज ऑफ +5। सो वी चूज सी एज द आंसर। अब रिडॉक्स रिएक्शन बेटा कौन से होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। एक ही रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी, और एक उसी रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा, रिडक्शन भी हो रही होगी, ठीक है ना। सो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ वन इन विच बोथ रिएक्शन, reduction and oxidation take place. Zarmab, you can also join Google Meet if you don't have the link. I'm sharing it in the chat, and yeah, you can join on Google Meet as well. I think you are in the group as well. You can use the link from a WhatsApp group as well. So here it is. That redox reaction is one in which both reduction and oxidation takes place together. So
In fact, oxidation never takes place on its own, nor does reduction. When one substance is oxidized in a reaction, इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ना होते हैं, या तो कुछ नहीं हो रहा या फिर दोनों हो रहे हैं। क्योंकि देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब है लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो अनदर थिंग इज एक्सेप्टिंग इट। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। सो हर एक रिएक्शन के अंदर जो कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन भी लाजमी हो रहा होगा। So they happen simultaneously. So there are two ways of defining oxidation and reduction, because हर एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होता है ना, उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन जो चीज़ हर दफ़ा इन्वॉल्व हो रही होती है ड्यूरिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है और ऑक्सीडेशन नंबर है। अब जिस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में हम ये कहते हैं कि गेन ऑफ सॉरी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, decrease in oxidation state is reduction. For example, if you look at the oxidation, so say it is removal of electron, there is an increase in oxidation number. For example, in case of zinc, oxidation number has increased from 0 to +2, and uh, zinc is being oxidized. So question में पूछ लेता है, what is the change in oxidation number of zinc? We say that it has changed from uh, 0 to +2. I think someone said something. Okay, so reduction is, we say here that gain of electrons, there is a decrease in oxidation number, species become more negative, they become less positive number as well. For example, in case of chlorine, electrons are being added. So and chlorine का oxidation number भी कम हो रहा है from 0 to -1. So that's why we say that chlorine has reduced. अब जिस तरह से असमा ने अभी हमें बताया कि ऑयल रिग एक वर्ड है, इसको आप याद रख सकते हो। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। लेकिन किसका लॉस किसका गेन? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल। लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर, वी कैन से दैट यानी ऑक्सीडेशन नंबर में रिड्यूस हो जाना। और रिडक्शन इज गेन, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या फिर ऑक्सीडेशन नंबर को गेन करना। Here he says classify the following changes as oxidation, reduction, or neither. So we say in the first one it is oxidation, because you see that oxidation number has changed from 0 to +2. So that's why it is oxidation. In case of B, oxidation number has reduced from +3 to 0. इसको तो हम कहेंगे this is oxidation, और दूसरे केस में हम यहाँ पर कहेंगे कि this is reduction. And in third case, again oxidation state has increased from 3 positive to 4 positive. So this is also oxidation. And how to determine change in oxidation numbers? क्या अगर हम ये देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया है, तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर increases and change will always be positive. During reduction, change in oxidation number will always be shown as negative. What change in oxidation number takes place in the underlying element? NO3 से NO बना है, तो यहाँ पर था +5 चार्ज और यहाँ पर है +2 चार्ज। So what is the change in oxidation number? We say that change in oxidation number is -3, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कर लेना वे रूल। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन क्रोमेट? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इसके ऊपर +6 चार्ज था और इसके ऊपर +3 चार्ज है, तो अगेन देर इज रिडक्शन बाय -3। अच्छा, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होते हैं हर एक रिएक्शन में? इफ इट इज एन रिडॉक्स रिएक्शन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, एंड यू गाइस ऑलरेडी नो अबाउट इट, राइट?
कि oxidizing agent is something which can oxidize itself, and reducing agent is something which can reduce, sorry, oxidizing agent oxidize others and reduces itself. Reducing agent reduce others and oxidize itself. जिस तरह से हम कहते हैं कि एक ट्रैवलिंग एजेंट होता है, तो वो दूसरों को तो ट्रैवल करवाता रहता है डेली, लेकिन खुद तो ऑफिस में बैठा रहता है अपने, ठीक है ना, वो ट्रैवल नहीं करता। इसी तरह से प्रॉपर्टी एजेंट है, वो खुद तो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं लेता, लेकिन डेली किसी ना किसी को प्रॉपर्टीज़ लेकर दे रहा होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद बैठा रहता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, ऑपोजिट होता है। सो द स्पीशीज इन विच, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इट इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, it gains electron, its oxidation number decreases. These are just definition. Again, I will share it with you guys, and you will. I hope that you will understand. If not, please reach out to me. So just look at this a redox reaction. इसमें देखो bromine is acting as an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रहा है, यानी वो खुद रिड्यूस हो रहा है। एंड आयोडाइड आइन, नॉट आयोडीन। देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, आई नेगेटिव, दैट इज ट्रू। और अगर मैं कहूँगा I2, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना। आई नेगेटिव खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है फ्रॉम -1 to 0। और याद रखें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑलवेज। Bromine is the oxidizing agent because oxidation number of bromine has decreased from 0 to -1. Bromine has increased the oxidation number। ये सारी वही चीज़ें हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। आई विल शेयर दिस recording as well as this PDF, sorry, PowerPoint presentation with you as well. So stay here, don't leave. Uh, stay here, stay here, stay here. We'll continue. अच्छा जी, तो अभी आपको इतना तो पता ही होगा कि हाउ डू वी नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। तो जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं, तो क्या होता है कि while writing down the names of transition elements, we write down 1, 2, 3, for example, copper 2 sulfate, copper 1 sulfate, copper 1 oxide, copper 2 oxide, and things like this, right? अब उसमें वो जो 2 और 3, iron 2 oxide, iron 3 oxide, हम ऐसे क्यों लिखते हैं? So we are going to discuss that thing over here. Just a second. Okay, so naming transition metal compounds, हम किस तरह से नाम उनको लिखेंगे? For example, we use a Roman numbers in brackets to name the compounds, ठीक है ना। इसको आप जल्दी से पढ़िएगा, इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। जल्दी से इसको पढ़ लें, क्विकली डू इट। देख लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स होती हैं ना जिनकी, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उसमें हमें लिखना होता है कि आयरन 2 ऑक्साइड, अगर ऐसे लिखा होगा ना कि आयरन 2 ऑक्साइड, इसका मीनिंग ये होता है कि आयरन हैज़ अ चार्ज ऑफ +2 एंड ऑक्सीजन हैज़ अ चार्ज ऑफ -2। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, FeO। और अगर लिखा होगा आयरन 3 ऑक्साइड, so what's that mean? It's going to give us a charge of +3 and oxygen has a charge of -2। अब इनको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना,
कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो इट विल टर्न आउट टू बी लाइक दिस, Fe2O3 as the formula. So for that kind of thing we need, we have to write them down like this one. अब देख, जिस तरह से ये है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, अभी हम बात कर रहे थे इनकी, कि जहाँ पर +2 चार्ज था नाइट्रोजन के ऊपर, तो हम उसको नाम इस तरह से लिखेंगे नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, यानी नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब है, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड था, तो वी विल राइट इट डाउन लाइक दिस वन, नाइट्रोजन +4 एंड ऑक्सीजन -2। तो 2 2s are 4, 2 1s are 1, तो ये हो जाएगा, दिस इज +2 एंड दिस इज -1। तो अब ये 2 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, तो फार्मूला क्या बन गया, NO2। सो बेसिकली दिस हेल्प अस टू फाइंड आउट दी फार्मूलाज। देर आर सम अदर एग्जांपल्स, जैसे ओवरऑल ऑक्सीडेशन H3PO4 में, you know that because of oxygen the charge will be -8, right? और H3 का टोटल चार्ज कितना होगा, +3। This is called as phosphorus 3 oxide. No, this is called as phosphorus pentaoxide basically। यहाँ पे 5 आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज होगा ना यहाँ पे, वो होगा +5, तो यहाँ पर भी +5 ही आ जाएगा। इसी तरह से HClO4 में देखें, तो HClO4, तो इट हैज़ अ चार्ज ऑफ -8, हाइड्रोजन हैज़ +1, तो इसको ज़ीरो करने के लिए हमें यहाँ पे +7 लिखना पड़ा। इसलिए हम, क्योंकि 7 तो क्लोरीन के लिए साथ लिखा ना हमने, तो इसको हमने लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हमने सिर्फ क्लोरिक एसिड लिख दिया, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक 7 एसिड। तो जब हम लिखेंगे क्लोरिक 7 एसिड, इसका मतलब होगा कि क्लोरीन के ऊपर +7 चार्ज है। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती हैं हाफ इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। इसमें हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस वन, कि ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। फॉर सोडियम्स केस वी विल, इन द हाफ इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, वी विल शो कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है ना, लाइक इट इज शोन ओवर हियर। एंड इन द हाफ इक्वेशन ऑफ रिडक्शन हम देखेंगे कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लाइक दिस वन। And it is here, write two half equations for the following reactions. For each half equation, state whether oxidation or reduction is occurring. Cl2 plus 2i negative 2 Cl negative and I2। तो यहाँ पर क्या होगा अब, कि हम पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन इक्वेशन, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि ऑक्सीडाइज हो कौन रहा है। यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जीरो चार्ज, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट डाउन हियर 2i नेगेटिव, when I2 will form it will have lost electrons, तभी तो ऑक्सीडाइज हुआ है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। एंड इफ आई विल राइट डाउन रिडक्शन हाफ इक्वेशन, तो रिडक्शन हाफ इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, कि वी हैव Cl2 over here, it gains electron and form chloride ion, to balance it we need to write 2 and 2 here, it is like this one। अच्छा, हम इन हाफ इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके या ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बैलेंस करके इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी दिस वन। ये दो इक्वेशंस हैं, अगर मुझे इनको बैलेंस करना हो तो मैं क्या करूँगा, कि बिकॉज देर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो आई विल मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन विद 5। तो ये इस तरह से बन जाएगी, Z5Zn+2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, और जो ऊपर वाली इक्वेशन है इट इज टर्निंग आउट टू बी 2iO3 नेगेटिव प्लस 12H पॉजिटिव प्लस
10 electrons and I2 and it is forming 6H2O. तो देखो 10 electrons cancel out हो गए and we have what? We have 5 zinc plus 2iO3 negative plus 12H positive and 5 zinc positive plus I2 plus 6H2O. इस तरह से हम पूरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं. He says a number of electrons lost and gained must be equal. They must be cancelled out if they are on the opposite side. अगर एक इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पर हैं दूसरी cancelled out. If this is a question, he says that there are two half equations, this and this. Again, तो हमें ओवरऑल एक इक्वेशन बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे. देखो ये टू है इसको फाइव नहीं किया जा सकता फाइव को टू नहीं किया जा सकता सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद फाइव एंड दिस इक्वेशन विद टू so that I can have here 10I negative and it will form 5I2 plus 10 electrons and the other equation that we have is 2MnO4 negative plus 16H positive plus 10 electrons. Then it forms Mn plus 2 plus 8H2O. So the overall equation that we can write down is 10 will cancel out and 10I negative plus 2MnO4 negative plus 16H positive and it will form 5I2 plus 2Mn plus 2 plus 8 water molecule. So in this way we can balance this equation as well. Balancing redox equations using oxidation numbers as well ये सबसे अच्छा पार्ट है पेपर में sometimes equation आ जाती है जिसको बैलेंस करना becomes difficult right so you can use oxidation numbers in order to balance them. फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली इसके ऊपर जा रहा हूँ जैसे ये इक्वेशन है ना लिखी हुई रेदर देन आई विल शो यू ऑन दी स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ अपने पेपर में क्या करना है सो यू विल राइट डाउन हियर इक्वेशन लाइक दिस वन कॉपर ऑक्साइड प्लस दिस इज अमोनिया एंड दिस इज कॉपर प्लस N2 प्लस H2O. आपने क्या करना है आपने सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स देख लेने हैं कॉपर इज +2 ऑक्सीजन इज -2 hydrogen is +3 नाइट्रोजन इज -3 कॉपर इज 0 नाइट्रोजन इज 0 यहाँ पर इनके ऊपर -2 और वही +1 × 2 तो यहाँ पर भी +1 × 3 था तो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हुए हैं ना वो सिर्फ चेंज हुए हैं कॉपर के फ्रॉम +2 to 0 ठीक है ना -2 कम हो गया और नाइट्रोजन का -3 से 0 हो गया यानी ये +3 हो गया अब नाउ दीज आर नॉट कैंसलिंग आउट ईच अदर -2 and 3 डोंट कैंसिल आउट तो जो -2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 3 ताकि ये 6 हो जाए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2 ताकि ये +6 हो जाए तो 3 हमने कहाँ पे मल्टीप्लाई किया कॉपर वाले के साथ तो 3 यहाँ पे लिखते हैं और 2 कहाँ पे मल्टीप्लाई किया वो हमने यहाँ पे किया तो अब इसको दोबारा से लिख लें 3CuO plus 2NH3 and it will form Cu plus N2 plus H2O. एंड पे जाकर बस आप नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट तो 3 कॉपर तो यहाँ पे 3 कॉपर लिखते हैं आप ठीक है ना और बिकॉज देर आर 3 ऑक्सीजन तो यहाँ पर 3 लिखते हैं आप देर आर 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन एवरीथिंग इज नाउ बैलेंस्ड ठीक है इसी तरह से ये वही इक्वेशन है अब देर इज अनदर इक्वेशन लाइक दिस वन अब यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दे आर स्टिल सेम आफ्टर एंड बिफोर द रिएक्शन इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ चेंज जो हुआ है ना वो मैंगनीज का फ्रॉम +7 to +2 यानी -5 हो गया है ठीक है और आयरन का चेंज हो गया फ्रॉम +2 to +3 इस तरह से डेट इज +1
तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी मैं 5 यहाँ पे लिख देता हूँ और 5 यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे क्या होगा, एक तो चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स बैलेंस हो जाएंगी। अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, on both sides we have 1 mn 1 mn, we have 4 oxygens on the reactant side, so I'm going to write down 4 over here. We have 8 hydrogens on the product side, so I'm going to write down 8 over here as well. So it works like this. अच्छा, एक रिएक्शन की एक और टाइप होती है, वी कॉल इट एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन से होते हैं? दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस। ठीक है ना? So disproportionation is the name for a reaction where an element simultaneously oxidizes and reduces. Disproportionation can be thought of as self-reduction slash oxidation reaction. When chlorine reacts with aqueous sodium hydroxide, then chlorine undergoes a disproportion reaction, यानी इसकी ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। लेकिन इसके दो डिफरेंट टेस्ट होते हैं। एक होता है विद कोल्ड NaOH। देखो, याद रखें, कोल्ड NaOH व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं ना, वो NaCl तो फॉर्म करता है दोनों के केसेस में, और वाटर भी फॉर्म करता है दोनों के केसेस में। H2O एंड H2O फॉर्म्स इन बोथ केसेस। ये सेंटर वाला जो है ना आपके पास, दिस इज डिफरेंट। इन केस ऑफ dilute NaOH, when it reacts with Cl2, it forms what? It forms NaClO, and here it forms NaClO3। it forms like this one। ठीक है? तो याद रखें कि NaClO फॉर्म करता है जब डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH यूज करते हैं हम, एंड NaClO3 फॉर्म्स व्हेन इट इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। इसी चीज को दोबारा से हम यहाँ पे करेंगे। You see that when reaction is between NaOH, ठीक है ना, cold NaOH and chlorine, it is forming NaClO, water and NaCl। अब इस केस में देखें, यहाँ पर क्लोरीन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो है -2 + 1, तो क्लोरीन की हो जाएगी +1। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है। तो बिकॉज क्लोरीन रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लोरीन का हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन देखें, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पर है -1, और यहाँ पर है +1, -6। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +5। तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन में it says that when chlorine and aqueous sodium hydroxide are heated together, the following overall reaction occur: chlorine plus 6NaOH, NaCl plus NaCl3 and H2O। What are the oxidation numbers of chlorine in each of these? तो बेटा हमें पता है कि जब क्लोरीन जस्ट एन एलिमेंट है तो उसका ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होएंगी। इन NaCl इट इज -1, इट इज +1, तो या तो ये होएगी या फिर ये होएगी। और NaClO3 में क्या होगा? सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत मार्क कर लिया है, ये दोनों तो गलत हैं। इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हमें आंसर तो मिल गया सी, लेकिन हम कंफर्म कर लेते हैं कि वेदर दिस इज 5 और नॉट। हमारे पास है NaClO3, सोडियम इज +1, one of the oxygen has charge of -2 times 3, that is equal to -6। बैलेंस करने के लिए we need to write down +5 here, so it confirms that C is the right answer। So with this we will end our lesson, and actually this topic that we have just covered, it does not have too many questions in the past papers alone। ये किसी और टॉपिक के साथ रिएक्शन मिलकर आ जाता होता है, ठीक है ना? तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह इन द कमिंग वीक। सो डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस लेसन? एनीवन? Sir, are the adapts uploaded of this chapter?
No, these are not uploaded yet, but I will upload it in the next week, and will tell you in the group that I have uploaded. Okay, sir. Okay, so this is it for now. Okay, we'll see you guys on Monday. Take care. Allah Hafiz.